Hello, my name is Smita and welcome to the second session of the beginner's course on Articulate 360. Oh, by the way, in session 1 of this series, there is a typo error in the video. Your challenge is to find out that error. Comment on the video if you find one. The more you participate in the challenges, the higher are your chances to win some goodies that I'm going to send end of the year. There is a challenge in this video too. We'll talk about it towards the end of the video. In this lesson, we will see how to download the trial version of Articulate 360 for practice and learning purpose only. Also, even when there are 8 different apps, we will focus on just Articulate Storyline. We will begin this session by exploring the welcome, or sometimes even referred as intro screen. We will also look at some resources, community pages, announcements and product support. इस लेसन में हम सबसे पहले सीखेंगे कि Articulate 360 का ट्रायल वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं। ध्यान रखें कि आप ट्रायल वर्जन सिर्फ और सिर्फ सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Articulate 360 में 8 अलग अलग ऐप्स हैं, पर इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ Articulate Storyline के बारे में ही चर्चा करेंगे। फिर हम वेलकम स्क्रीन और रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। To download the trial version of Articulate 360, visit the Articulate website, or you may also go to www.articulate.com/360. While you are on this web page, please look at the features, pricing, and the resources tab. I would also recommend that you watch the video to find out if you're really interested in learning and investing in this authoring tool. Picking up a new skill or buying a tool requires a serious commitment. Once you're ready, click on the free trial button on the top right corner and follow the on-screen instructions. With this, you get a free 60-day trial access to the tool, which is good enough time to learn and practice on the tools. सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए आर्टिकुलेट वेबसाइट पे जाइए www.articulate.com/360 और फ्री ट्रायल बटन पे क्लिक करें। स्क्रीन पे दिए हुए अनुदेश को फॉलो करें। आर्टिकुलेट आपको 60 डेज का ट्रायल एक्सेस लेता है। ये समय सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी है। When you open Storyline application, you will see a welcome screen, or sometimes even referred as intro screen. On the top left here, you will see options to create a new project. The first option, New Project, lets you create a new standard Storyline project. The Record Screen option lets you create a project by recording the screen. This option is perfect for creating a software simulation, demos or walkthroughs. And finally, you can also create a project by importing from other softwares like PowerPoint and Articulate softwares like Quizmaker, Engage or another Storyline project. The last option in the import section lets you import questions or quiz from Microsoft Excel or text file. जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो वेलकम स्क्रीन पे लेफ्ट में सबसे ऊपर आपको नए स्टोरी लाइन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप या तो नया स्टैंडर्ड स्टोरी लाइन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाला ऑप्शन यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे पावरपॉइंट, क्विज़मेकर, एंगेज या स्टोरी लाइन फाइल से इंपोर्ट करके नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और इंपोर्ट में ही आखिरी ऑप्शन से आप एक्सेल या टेक्स्ट फाइल से सवाल या क्विज फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। Just underneath, you can open your recent files or browse your computer for an existing storyline project. यहाँ से आप recent या आपके कंप्यूटर में saved storyline project open कर सकते हैं। On the right here, you will find information on new announcements, software releases and changes. Right at the bottom, there are 3 options that link to the resources, community pages, and forums. Articulate offers a lot of resources and has a robust community and support. The most important step in learning this tool is to go through the resources and inspirations available on the Articulate website and the community pages. एक अच्छे Articulate डेवलपर बनने के लिए आप कभी भी कम्युनिटी पेजेस और हेल्प सेंटर आर्टिकल्स को इग्नोर ना करें।
मैं खुद जब सीख रही थी तब ये डिस्कशन forums और community pages मेरे बहुत काम आए. Your challenge for this video is to click on the links at the bottom and let us know in the comments section what you find. In the next session, we will create a standard project and then resize the project to our custom size. See you then!